morning everyone, this is Naveen from One Wild Lens, from jungle thrills to the mountain chills. So we're here with our another vlog, another safari. Now this time I'm at the Rajaji National Park. This is the stay, Rosette Farmstead. बहुत अच्छा stay है. This is the closest stay to Rajaji National Park, Chillawali Gate. Hello sweetie. ये हिरन है, हिरन. यहाँ की हिरन है ना, तो ये हिरन. गुड मॉर्निंग नसीम. गुड मॉर्निंग नसीम. चलते हैं बस कॉफी वॉफी पी के. थैंक यू सो मच. सुबह की कड़क कॉफी और उसके बाद सीधा सफारी. मन में एक ही सवाल, आज क्या दिखेगा. भाई जिम कॉर्बेट लग रहा है. सुबह के जंगल का अपना ही एक मैजिक होता है. ठंडी हवा, हल्की धुंध और दूर कहीं से आती हुई कोयल की आवाज. ऐसा लगता है जैसे जंगल आपका स्वागत कर रहा हो. सफारी यहाँ एक एडवेंचर है. कोई गारंटी नहीं यहाँ पे लेपर्ड मिले या ना मिले, लेकिन हर पेड़ के पीछे कुछ छुपा हुआ लगता है. दिल धड़कता रहता है. और फिर वो दिखा. शांत, खतरनाक और शान से भरा हुआ. आंखों में एक अलग ही रोशनी थी. ना गुस्सा, ना डर, बस एक जंगल की सेल्फ कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ. वो हमें देख रहा था, लेकिन उसकी नजर में सिर्फ एक ही बात थी, ये मेरा इलाका है. ये देख रहा उधर कॉल की तरफ. He's looking right at us. तो आज है हमारे साथ सुबह से नसीम भाई. ये नसीम भाई की किस्मत है बहुत बढ़िया. इनके साथ जाओ, सबसे पहले मिल ही जाता है. आप ही को मिलेगा सबसे पहले, और किसी को मिले ना मिले. ये देखो आज क्या दिखा रहे हैं आपको हम. Right, beautiful place. Now let's meet the man, Achintya. Hi Achintya, क्या हाल चाल? All is well भाई, आप कैसे हो? Superb. Good to see you. Good to see you too. अब बताओ. So कुछ बताओ जगह के बारे में. कब शुरू किया, कैसा है, and how many rooms this place has? So first of all, I'd like to say that welcome to the Rosette Farmstead. Why we call this place Rosette, or the meaning of our name is basically the pattern or the spots on a leopard's body are defined as a rosette. So if you take a rose and you dip it in ink and you press that ink on a piece of paper, the pattern that will be formed will resemble the pattern that a leopard has. Superb. So that pattern gets a name called Rosette. Oh. So that's what our name stands for, and that's what it represents. And the coincidence is, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि रोजेट क्यों रखा तुमने. हाँ, तो इस जगह पे मैं नेशनल पार्क से करीब 10 मिनट दूर हूँ. 2019 में जब मैं इस पार्क में वापस आया था, हालांकि आई हैव बीन विजिटिंग दिस प्लेस सिंस आई वाज 12-13 years old, because my dad was a forest officer and he was posted around Saharanpur, and I used to come to this place often, specifically Mohand. But back in those days, the tribal communities had their camps in Gajro, Binjro, where we have sightings today. It was all small settlements and camps, and a lot of villagers would stay inside. So there was constant movement of people on the track and in the park during the day and during the evening. So there would be leopards, but in the night. There was no such wildlife activity that goes on right now.
So in 2019 we still had this piece of land, and in 2019 I was around this region and I decided to check around कि अंदर क्या हो रहा है. So I did one single safari and I realized कि oh, the villages have been relocated, Right. and now it's just an empty clean area without the disturbance of people. Right. I still wasn't expecting to stumble upon a leopard, but my first park round I saw a bunch of elephants, and Nice. while coming outside I saw a leopard crossing. Right. And then on speaking to the driver, उस time पे शहजाद was there was just one car. So मेरी शहजाद से बचपन से बात होती है. उस time पे मैंने जब उससे बात करी तो मैंने कहा यार ये कितना often होता है, तो he said भैया अक्सर हो जाता है. Immediately उस time के बाद pandemic आ गया, तो उस time period पे हम ज़्यादा explore नहीं कर पाए. Pandemic के बाद we specifically, like, I got very regular to this place, so I did a lot of consecutive park rounds. I did about 150 safaris in my first season here, in which I was able to see some 27 individuals. Nice. At this point I have seen 10 more individuals in this 18-kilometer long road. Nice. So I can say कि करीब 37 individuals हमारे पास पार्क में. Superb. तो पार्क से 10 मिनट दूर, क्योंकि मैं एक फोटोग्राफर था और मैं ट्रैवल करके ऐसी ही जगहों पे रुकता था, Right. तो बहुत सारी जगहों के अच्छे आइडियाज का कॉम्बिनेशन करके आई हैव बिल्ट दिस प्लेस. इट इज बाय फोटोग्राफर्स and it is for photographers. It's a beautiful place. So we The have combination worked really well for you. I think Yeah. it really worked in favor. कि you actually built exactly what a tourist photographer needs. जी. तो अब छोटा सा वॉक थ्रू भी देते हैं मैं yes. आपको प्रॉपर्टी के थ्रू. So our birds are usually free range. They only go into an enclosure at night. दिन में सब खुले घूमते हैं इधर उधर. Good, यार. Very good. If you come here, you can meet this guy. Hello. Hello, people. Hello, how are you? Look at me. Cutie pie. Yes, I met you in the morning, but I could not तो meet ये you गंगा की properly. बेटी है And now I'm meeting you. और वो गंगा है. Holy. Holy. Acha. That is. Hello. भाई तो पीछे से मत दियो. पीछे से मत मार दियो भाई. बस पता चला मैं आगे. नहीं वो मारेगा नहीं, वो बस चिल करता रहता है. ओ मेरे पैर पे चढ़ गया मेरे भाई. हाँ बहुत प्यार मिल रहा है. बाय. आ जाओ. So this is where our common dining area is. It's entirely made of wood and thatch. Nice.
We have a lot of pictures here on display. This is where we eat our breakfast, lunch, dinner, evening snacks. Everything happens here. Morning tea, all goes on in here. And a projector, right? Yeah, this is for photography workshops. We show a lot of documentaries. So in all those things, the projector comes into place. Definitely. Yeah, sometimes certain people, if they're not doing safaris and they want to relax, so they want to watch their own movies, etc. So that Right. also works. So all that we do here. Beautiful place, yeah, beautiful. I think people should know about this place. I will definitely put all the details in the video below Sure, and with your name and your number so definitely. that people can reach, and also your Instagram handle, Sure. right? Chalo guys, take care. See you. Bye.